Hello and welcome to another YouTube live at the Indie Football Podcast. Today I am joined by रोशन भाई, पार्थिव भाई जो जस्ट लास्ट मोमेंट पर आए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट फिनिश है जेरार्ड, जैसे जेरार्ड की थी वेस्ट हैम के अगेंस्ट एफए कप फाइनल में उस साल। और दर्शन भाई भी हमारे साथ है दैट लिवरपूल गाय के नाम से। रोशन भाई ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट टू मेंशन इज फ्रॉम एलएफसी अहमदाबाद। सो गाइस शुरू करते हैं पीड़ा की दास्ता, शुरू करते हैं बातें करना और अपने दुख दर्द बांटना। बट यार आई कम टू द पर्सन हु इज द मोस्ट पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू आवर ओनर्स। रोशन भाई, कैसा हम्म। लगता है कोई मिडफील्डर आएगा, दो मिडफील्डर्स आएगी, एक भी मिडफील्डर आएगा, या फिर लग रहा है कि मैकएलिस्टर की बारी खत्म हो जाएगा सब? दो आएंगे बट आई फील कि काफी वैसा चल रहा है ना। मतलब बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है तो हम अपने कार्ड्स नहीं दिखाना चाहते हैं। मे बी लाइक देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन बट बाहर न्यूज नहीं पहुंची है। लाइक इवन पीपल हु आर क्लोज टू एजेंट्स एंड प्लेयर्स देमसेल्व्स, उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन राइट, होगा राइट। नहीं। तो वी माइट बी स्टिल सीइंग कि अभी तक बिड आई नहीं है, बट बिहाइंड द सीन्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। एंड लिवरपूल का एक चीज मैंने नोटिस किया, इफ दे हैव दैट टारगेट आइडेंटिफाइड एंड हु इज अचीवेबल, उन्होंने किया ही है। लाइक ऑब्वियसली यू कांट थिंक अबाउट बेलिंगम जैसे प्लेयर्स जिनका प्राइस इतना इन्फ्लेटेड है, बट फॉर प्लेयर्स लाइक विएगा एंड फॉर थुरम एंड लाइक दोस वी कैन अचीव इजीली। अभी प्रॉब्लम ये है कि नीस डजंट वांट टू लाइक गिव अवे थुरम, लाइक दैट राइट, इज राइट। आल्सो अ रेजिस्टेंस। तो इट इज नॉट जस्ट कि प्लेयर की इच्छा है तो छोड़ देंगे। तो वो सारी चीजें भी बहुत हैं। तो आई आई सस्पेक्ट देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन बट वी जस्ट डोंट नो। राइट, एंड राइट, हर राइट। जगह जहाँ पे नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा है, पीपल आर स्टिल एट दैट स्टेटस ऑफ लाइक इंटरेस्टेड बट नो बिड येट। इंटरेस्टेड एफसी, मॉनिटरिंग एफसी। दर्शन भाई, तो आप बरेला पे काफी कंटेंट डाल रहे हो आजकल। तो हाँ, क्या लगता है कि मतलब निकोला बरेला आएगा कि विल द ड्रीम भी, मतलब देयर इज देयर अ चांस? चांस तो सभी चीज़ों का होता है अनुकुल। चांस तो छोटा सा ऐसा भी है कि मैं जानवी कपूर के साथ एंड अप हो जाऊँ। चांस तो सभी का होता है। सो और रियलिटी में एम्बापे होता है लिवरपूल ऐसा आ नहीं जाए। है। प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सिर्फ हम इंटरेस्टेड एफसी बन के रह गए हैं, हाँ। क्योंकि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। मैं समझता हूँ जो रोशन भाई ने अभी बोला कि अभी बहुत जल्दी है और हम अपने कार्ड सभी को दिखाना नहीं चाहते कि हम क्या करने वाले हैं। मगर मेरे हिसाब से ये तीन बंदे ही है, जैसे बरेला है, मानू कोने के साथ भी हमारा लिंक आया है, थूरम राइट। है और विएगा। ये चार में से ही कोई हम मिडफील्डर साइन करेंगे। सो अगर हो सके तो जल्दी करना चाहिए, मगर अगेन जो निगोशिएशन होता है वो होता है, उसमें टाइम लगता है और हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, तो कमेंट नहीं कर सकते। फेयर इनफ। और तो अभी पार्थ तो भाई, आई विल जस्ट हाँ कम टू यू हियर। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि लिवरपूल को अगर एक मिडफील्डर खरीदना हो, तो क्या वो एक गैब्रियल विएगा जैसे प्लेयर होना चाहिए जो काफी अटैकिंग है, जिसने लास्ट सीजन 25 मैचेस में फ्रॉम मिडफील्ड 10 गोल्स मारे? या फिर आपको लगता है कोई रिलेटिवली डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर होना चाहिए जो डबल पिवट में खेला है, जैसे कि मानू कोने? हु डू यू थिंक वुड बी द राइट प्रोफाइल फॉर लिवरपूल? Honestly, the French guys are a better fit for Liverpool because see, Hmm. we are at a time where we have attacking players. We have Gakpo who can play in a hybrid role. Kuch nahi hua to we can play Jota as well, or we have somebody like, let's say, the likes of McAllister who just came on, can play as a number 10 who can press high on the field. So we need somebody as a backup or as somebody who can play at the back. We have Bachetic now. Yeah, not to forget we have Jones and Elliott as well can play at the forward, and हाँ। they apparently will get this season full. So we need somebody like Kone or Thuram who have the physicality. See, out of these two, Thuram is a more complete player. Kone is a more one-dimensional player. But at this point, I'd say that Kone is a better fit for us because the defense is the main lacking right now, which we have. It's right. not only the entire complete midfielder thing, it's the thing जे अगर बॉल आ रहा है तो हम लोग उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, पीछे का साइड पूरा एक्सपोज हो जा रहा है। तो उस वाइज Yeah. प्लस ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि कोने प्लेज इन हाई लाइन, तो उसको हाई लाइन का एक्सपीरियंस भी है। सो वो वाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड इसके अलावा इन माय ओपिनियन आई फील कि एक मिडफील्डर आएगा, एक डिफेंडर आएगा।
And defender, I hope is Van de Ven. Because I don't know, matlab, you might tell me that it's very awkward, but Dutch players on Liverpool have a quite a history and always हाँ, turns out for the better. So, उसी wise, I feel Jay. Van de fair Ven enough. and बात Thuram will आपकी definitely. हम्म, To be बिल्कुल honest, मैं भी अग्री करता हूँ आपकी बात से। रोशन भाई, आई कम टू यू हियर एक बार। मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थिंक आप कुछ कहना चाह रहे हो। मतलब मैं बस यही कह रहा था कि मेरे बस ये था, जैसे जैसे आज वो आया था फैब्रिज़ो रोमानो का अपडेट कि टॉटनहम ने भी अब शॉर्टलिस्ट कर दिया मिकी वैन डे वीन को। सो डू यू थिंक दैट लिवरपूल शुड गो ऑल आउट फॉर हिम, और डू यू फील दैट देयर आर अदर डिफेंडर्स इन द मार्केट दैट कुड बी बेटर फिट्स? यार तुम उसको टॉटनम और लिवरपूल से कंपेयर कर रहे हो. देयर इज लिटरली नो कंपैरिजन. I think it all depends on if he thinks he can get first team. क्योंकि अगर मैटिप या फिर गोमेज में से कोई भी नहीं जा रहा है, and if they both are there, then again I guess the preference is for a left-footed center back, right? So हाँ, that means that he will get the chance because we don't have a left-footed center back. And so therefore Konate and Van Dijk can be rotated in the left side center back, because that will be the one who will be playing with the right foot, and right sided center back plays with their left foot. So ऐसे देखोगे तो it makes sense कि Van Dijk and Konate can interchange, and then Mickey, while being there, will be the one. But या वो पता भी नहीं चल रहा. आई थिंक जो गोमेज का ऐसा बोला गया है कि the team has faith in him that he will come back even after a bad season. So if he feels like he's not going to be a part in the coming season, depends ki how much he wants to play first team football, because आई he's going to. मतलब हैव जस्ट वन थिंग टू से अबाउट जो गोमेज कि वो ना, मुझे लगता है कि होम ग्रोन कोटा की वजह से ज्यादा है रोशन भाई एट दिस पॉइंट ऑफ हाँ टाइम, नहीं, बिकॉज अरे इंग्लिश कोटा भाई इम्पोर्टेंट है. अगर उसको लग रहा है कि तुमने he वो can वीडियो play देखा है he उसका? can play a part in the first team, give him a video call with me, I will make him कि भाई तुमको नहीं खेलना है, इस क्लब को जरूरत नहीं है, we don't deserve you, you are too good for us. एक मैच में वो अपोजिट टीम के लिए 4 असिस्ट ओजिल नहीं कर पाता. नापोली रियल वो फैन। वो वीडियो देखा है? भाई उसमें ये उसमें एलन पार्टी शेरर के लिए नहीं डुबा दी उसने. रियल मैड्रिड के डील से। एलन शेरर और गैरी लिनेकर बैठे होते हैं माइका रिचर्ड्स के साथ. तो माइका रिचर्ड्स बोलते हैं कि मैन सिटी को अपना यूके कोटा फिल करना था, तो उसको उन्होंने उस टाइम पे 100,000 पाउंड्स अ वीक दे के रखने वाले थे. बट ही वाज गोइंग टू प्ले बिहाइंड जाबालेटा. ही वाज नॉट गोइंग टू गेट फर्स्ट टीम चांस. तो उसने खेला ही नहीं. ही वेंट टू एस्टन विला, और फिर एस्टन विला रेलीगेट हो गया था, ऐसा कुछ तो हो गया था. तो so that also, yeah, so that is the case for sure, that English quota is important. Abhi Milner chala gaya hai na, so that's another thing, that we have to fill our English quota. मिलना And है even उसमें I think हाँ, even दर्शन भाई, Fabio Carvalho is also an English player technically, like I mean जो हाँ देखा होम गया. ग्रोन कोटा तो है उसका, पर आई थिंक जितना हाँ मुझे पता है अंडर 21 में ही आता था वो, तो आई डोंट थिंक ही नहीं नहीं, और तेरे इवन फर्स्ट एग्जिट तेरे काउंटेड। फर्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं है. फर्स्ट टीम स्क्वाड में जो 23 या 25 रहते हैं ना, उसमें हाँ, there has to be a certain number of English players, if I'm not wrong. या मगर हाँ अंडर 21 हो तो उनको नहीं काउंट करते. नहीं जैसे काउंट हाँ करते. एब्सोल्युटली, ठीक है, दर्शन तो भाई फिर सही आई बात कर थिंक रहे हाँ मिलनर गया है, तो आई थिंक वी कांट अफोर्ड जो गोमेज टू गो आल्सो, लाइक इफ हो। इट इज जस्ट अबाउट द कोटा. तो दर्शन भाई, जितने इंग्लिश अच्छा प्लेयर अपने चले भाई गए, और इसलिए एक मुझे बात है, लगता है कि गोमस का एक एक डिफेंडर है, शायद आप लोग ने इसका नाम सुना होगा, बट ही इज एक्चुअली वन लेवी ऑफ माय कॉल, फेवरेट्स बिकॉज लेवी कॉल, no, it's not Levi Colby. It's actually a guy who's still in the team right now. His profile suits as well. His name is Sepp Vandenberg. उसका जो अच्छा, प्रोफाइल है, it is हाँ very suitable for the club. He's आई tall, नो, he's strong. फिर उसके बाद he has the pace, but he's raw. मतलब he's 21 right now. So in my opinion, if you ask me, I'll tell कि भाई, like, give this guy a chance, because the situation we are in right now, the main target for us should be that the Europa League and the UCL, sorry, UCL, पर ऐसा तो नेटवर्क्स को PL, रखना and we बेटर get a रहेगा lot ना। of games where we don't always play the first team. बट यार पार्थिव भाई फिर नेट फ्लिप्स को So रखना बेटर if नहीं रहेगा, बिकॉज आई थिंक ही इज आल्सो एक्सपीरियंस्ड इन अ मच बेटर इंग्लिश सेंटर बैक दैट वे, बिकॉज मुझे तो सेब समझ में नहीं वैंडनबर्ग। आता why हाँ, not Nat Phillips, like just genuinely उसने he या he and Reece Williams basically got us to the position where we could fight for that Champions League वही, position, आई नो। and I तो don't know दर्शन why भाई आई club कम does हियर। not have any faith हाँ, in him. but भाई अभी दर्शन भाई मैच से उसको तो पूछने वाली थी। खिलाते भी नहीं है ना.
क्या हाँ प्रॉब्लम वही है ना, नेट फिलिप्स को नेट खिलाते ही फिलिप्स नहीं को है तो खिलाते भी नहीं। वही एक्चुअली। दर्शन भाई, कम टू यू है लेवी कॉलविल पे क्या आपका ओपिनियन है? आपको लगता है लिवरपूल कैन गेट हिम दिस टाइम अराउंड बिकॉज चेल्सी विल प्ले हार्ड बॉल? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता हम उसको साइन करेंगे क्लियरली। जैसे पार्थू ने अभी कहा ना, वी एक्चुअली हैव सम टिक मार्क कि भाई अपने को इतनी रेंज के बाहर का प्लेयर देखना ही नहीं। 35 मिलियन 40 मिलियन उसके बाहर अगर बात भी गई तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता वो उतने कम रेंज में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी पार्टी भी इंटरेस्टेड है उसके लिए। तो राइवल मुझे क्लब नहीं है लगता। वैसे भी। हाँ फेयर एनफ, फेयर एनफ। पार्थिव भाई, सो अभी लिवरपूल अभी किएजा के लिंक्स आ रहे हैं काफी, फेडरिको किएजा के। नो, मोहम्मद साला का कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, हाल भी एलियट चलो मैं कह सकता हूँ एक बार को, बट कोई ऐसा नहीं जो कम्पीट करे मोहम्मद साला से ना राइट विंग। So, like, do you think that a player like Federico Chiesa, who is like 25 or 6, could be someone who could, really complete the puzzle in attack? See, if you tell me honestly, if Chiesa is coming the next year, which would be the ideal time, or when Salah goes away, then the signing of Nunez makes much more sense, because then we are playing a functional number 9 who is getting the balls from the right and the left. Because see, Chiesa is not a player who will score 20 goals in the Premier League. You can Hmm. tell me that Salah was the same in Syria, but it is not the case, because Chiesa is a kind of a player who's a traditional right winger who has pace, who has good dribbling, who can create. Finishing isn't really his strong suit, nor was Salah. Hmm. See, a lot depends on the development as well, which I understand. But at the same time, when you're buying a winger at his peak, you expect certain things from him, which I feel, Jay, Right. it does not make sense. So at that point, I feel, Jay, you keep Elliot and Doak as his understudies, and I feel Doak has a career here. Honestly, जितना भी उसका गेम देखा है मैंने, डोक का मेरे को जो प्रोफाइल है मस्त ना, है। उसका एक बहुत ही फियरलेस रनर टाइप प्रोफाइल है उसका, कि बॉल आ हाँ, रहा है वो ही इज अ मतलब रियली गुड वो ड्रिबलर। गिर गया। He's a very good एग्जैक्टली, footballer. तो उसको अगर अपन डेवलप करेंगे ना और ज्यादा, ही वुड बी अ परफेक्ट साला रिप्लेसमेंट। उसके पास पेस है, एंड एन ब्रिटिश गाय विद पेस, वी हैव सीन दिस स्टोरी बिफोर। सर कैन यू डाइग्लिश with this Scottish symbol as well, so रहीम स्टर्लिंग। what I mean. Very, रहीम स्टर्लिंग में। very huge style. तो रोशन भाई, लेकिन मैं भी अग्री करता हूँ पार्थी ने जो बोला ना कि हम्म, उसकी जो प्राइस रेंज है 40 मिलियन के आसपास कह रहे हैं, वो राइट सेंस राइट। अभी नहीं बन रहा, क्योंकि हम पहले भी मिडफील्डर चाहिए हमको, सेंटर बैक चाहिए, तो आप अगेन एक अटैकर पे 40 मिलियन स्पेंड करना, क्योंकि वो खेलेगा नहीं। जैसे साला का रिकॉर्ड है, इंजरी रिकॉर्ड, गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड, हम्म। मुझे तो नहीं लगता वो खेलेगा इतना। और So, किएसा को एसीएल टेयर भी हो चुका है, लाइक ही इज हाँ, रिकवरिंग फ्रॉम एग्जैक्ट दैट। एग्जैक्ट। तो और अपने दैट्स पास वन ऑफ द बहुत सारे अटैकर्स है, एंड इन दिस करंट सीजन आई डोंट सी हिम कमिंग, लाइक आगे नेक्स्ट थिंग्स। सीजन में मे बी। बट द प्रॉब्लम इज, आई हैव हर्ड अभी कुछ आ रहा था कि किएसा को ये टारगेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा, न्यूकासल भी टारगेट कर रहा है। तो कुड again, बी पॉसिबल। I don't mind him going to Newcastle. Like he's a good player, but अभी currently नहीं चाहिए हम लोग को. It's not a requirement, and we don't राइट need a. राइट। We need a defensive midfielder and we need a center back for sure, and we also need a right back. Considering अगर Trent plays a lot more midfield, आई then थिंक बेंजामिन पवार्ड से अभी लिंक हुए। आई थिंक आई पर्सनली फील ही वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग बिकॉज आई थिंक he can play at center I half, he can play I've at heard right back. I've heard Kyle Walker का भी चल रहा है because he's a free But Kyle agent. Walker, I think it's just a hyped up thing because first of all, Manchester City won't sell to their rivals. पहली बात तो ये, मतलब that's just my personal opinion. I might be wrong. And दूसरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि अभी FFP तू अगर 32 वैसे, player। if you look at the rival wala scene, then he would not have given Gundogan to Barcelona either, right? Like they will meet in Champions League. Let's say there's a high I chance that think Gundogan Barcelona. himself wanted to go. No, it's not like Yeah, no, he was anyway offered a it made contract. No? sense for him because Busquets was leaving, and so why not get that chance? I mean, you know. Mm-hmm. एंड पेप का But बहुत वो सीन है कि वो मिडफील्डर्स, अभी So guys, कैल्विन what is फिलिप्स your फिट नहीं था, opinion on इसके लिए Tyler उसको Morton? मिला चांस। इफ कैल्विन टाइलर फिलिप्स, मॉर्टन, हाँ, क्या लगता है रोशन भाई टाइलर मॉर्टन में आपको? यार ये बहुत यंग प्लेयर्स है यार। ही इज रियली गुड दो,
उसने चैंपियंस लीग में भी मस्त खेला था जब अपने को जरूरत थी। आई थिंक एसी मिलान के अगेंस्ट खेला था उसने। I really like him, but I think Bajcetic has more like उसका hierarchy में he is a little bit higher सीलिंग than Morata. Absolutely. दर्शन भाई उससे लिंक हुई है लिवरपूल रायन ग्रावेनबर्ग से। सो अब आपको याद होगा एक सीजन पहले जब बायर्न ने खरीदा था उसे, तो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स अराउंड, यंग डिफेंसिव मिडफील्डर्स अराउंड इन द वर्ल्ड। ही वाज टाउटेड लाइक दैट। तो आपको लगता है कि अगर थ्योराम को भी खरीदती है लिवरपूल, गेटिंग रायन ग्रावेनबर्ग एज द थर्ड मिडफील्डर वुड मेक मोर सेंस, और डू यू थिंक मानू कोने वुड बी अ बेटर साइन? आई वुड प्रीफर मानो कोने एंड थूरम, बिकॉज आपने देखा होगा फ्रांस के लिए उन दोनों को खेलते हुए। मैं आई थिंक अगर मुझे प्रेफरेंस मिले तो मैं कोने को पहले साइन करूंगा, उसके बाद थूरम को। मगर Right. अब अभी जो लिंक्स आ रही है, जब जो न्यूज़ हमको मिली है, आई थिंक थूरम इज मोर गेटेबल। आप कह सकते हो कि वो उसका ज़्यादा चांस है अपने को साइन करने का। सो इसीलिए क्लब पहले थूरम के पीछे जा रहा है, और अगर हमारे पास पैसे बचे, ऐसा बोल रहे हैं, तो हम कोने के साथ हैं। मेन रीज़न वही है कि जो हमें चाहिए, जैसे कि एक बंदा जो ऑलरेडी प्रेस सिस्टम में खेलता हो, कोने वो है ऑलरेडी। वो बहुत ही अच्छी तरह से समझता है कि पासिस को कैसे ब्रेक करते हैं वो। उसके अलावा फॉरवर्ड भी जाता है, ऐसा है नहीं कि वो आउट एंड आउट डिस्ट्रॉयर है, आप पीछे ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंट्रीब्यूट भी करता है अटैक में। सो अगर हो सके तो हमें कोने के लिए ही जाइए, क्योंकि दूसरे ऑप्शन उतने ज़्यादा सॉलिड नहीं लग रहे हैं। Fair enough. Parthiv bhai, agar if Kelleher goes, then who do you think, who would you like to see as a second goalkeeper coming in? Who is not very pricey also, considering Liverpool के पास बहुत सारे पैसे नहीं है, as we know. But who, because the thing is, Kelleher for me is one of the best goalkeepers in the Premier League after Alisson. Like, मतलब, of course, as a second goalkeeper, I think he's one of the best. So, like, what do you think? Like, do you think कोई प्रीमियर लीग में देखना चाहिए, और do you have like a name outside the Premier League जो would be a good signing for the second goalkeeper See, spot? अभी इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये बहुत ही एक रेयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज समथिंग आई बिलीव दैट people should actually look into it, because the money we get from Kelleher, use 70% of it to buy a midfielder or towards the midfielder fund. Use it for that, and the amount you have, Barella fund. buy a goalkeeper from the I think buy a एक keeper चीज from the ये है championship, कि if you guys know अपने पास एक because थर्ड कीपर championship में है बहुत अच्छे keepers available. लिवरपूल के पास ऑलरेडी एक कीपर है, डैनियल पितालुगा is the Brazilian young kid जो But he's very young. के साथ I think coach कर he's रहा है। too young to be like I mean given that Kelleher chance. But एक बात भाई, मतलब I अनुप्रास भाई, haven't रोशन seen भाई, him, दर्शन so भाई, I आप would like तीनों to से see him. नहीं, बट अगर एक स्टेटमेंट एक मेरा चीज खुद मैं का है कि जिस सीजन निक पोप आया था ना, ये पूरे मिक्स में, निक पोप एज द गोलकीपर ऑफ बर्नली, उस सीजन उसको इंजरी हुआ था, दैट्स उसको चांस मिला। आज देखिए, ही इज competing for England's number 1 keeper. So Right. when you have like 1 million 2 million, you get a keeper for that amount. एक को खरीदो जो कि यंग प्लेयर, इस पर अच्छा खासा सीलिंग है, put him in the mix, see how he does. मतलब हम लोग वैसे भी EFL कप और FA कप को उतना सीरियसली लेते भी नहीं है, मतलब कभी लिया भी नहीं, जिस बार लिया उस बार हम लोग जीत गए, so we don't take it ultimately. So But then give एक मेरा chance to young पॉइंट है guys. कि एलिसन जो है, एक बार मैं आपको इंटरप्ट करूंगा जो एलिसन है, as good as a goalkeeper he tends to get injured at some point every season, चाहे वो 1-2 मैच के लिए हो, चाहे वो 4-5 मैच के लिए हो, यूजुअली कुछ ना कुछ होता है। जैसे जिस सीजन प्रीमियर लीग जीती थी लिवरपूल, उस सीजन ही वाज इंजर्ड फॉर 8-9 मैचेस, हर सीजन लाइक एलिसन से थोड़ी सी निगल्स हो जाती है। तो आई थिंक कंसीडरिंग ऐसा कोई टाइम आता है कि टाइटल डिसाइडर हो या फिर लाइक टॉप 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो, डू यू थिंक लाइक putting that player, like that profile of player जिस पे हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, would be the right choice at that point of time? Ben See, Foster. honestly, nobody has that kind of depth. बिल्कुल। अगर एडिसन इंजर होता है, you can't expect Ortega to take up Edison's shoes. So in that sense में हम लोग की किस्मत वैसे भी फूटी है, फिर से फूट जाएगी, वही लेके हम लोग सो जाएंगे नंबर 2 का ट्रॉफी लेके।
But उसके अलावा I feel जे मतलब yes, it's actually because Alisson is actually pretty injury prone as a goalkeeper, हाँ which is एज अ rare. गोलकीपर यार But then in that sense, I don't think मतलब you can actually do something because it's pretty मतलब impossible to judge or predict because no matter who you bring, if you bring him at one game एक्चुअली at the मुझे Anfield, क्या which is लगता है the ना title कि decider or Champions League final or FA Cup final, he can never take up that pressure because he hasn't played that. राइट कैलियर हुआ था बिकॉज उसने खेला भी था उसने हर गेम्स खेले भी थे उसने ही वाज इन द मिक्स बट अगर किसी को लेना ही है देन इन दैट सेंस द साउथहैम्पटन कीपर हु गॉट relegated this season and the Coventry keeper who could not make it, both of them are good shouts. fair enough मुझे Saransh क्या bhai is लगता है also ना with us कि केलहर को हम Saransh शायद bhai is बेचेंगे also ही नहीं, क्योंकि yeah हाँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कौन उसको खरीदेगा जो हमारी आस्किंग प्राइस है उसकी। right अरे मैं makes एक sense चीज बोलता हूँ दर्शन भाई, हमने ब्रूस्टर को 20-20 मिलियन में भेजा जिसने एक गोल नहीं मारा था Michael लिवरपूल के लिए, तो Edwards था केलेहर को तो अब रोशन बेच भाई ही देंगे। Michael Edwards था तब रोशन कोई भाई बात नहीं, हम कैसे बेच सी केलेहर रियन ब्रूस्टर को बेच लिए, तो केलेहर को तो विद दीज accomplishments he can easily fetch us a good price, I I think. also feel that personally, I also feel that a player like Kelleher should at least be sold for 25-30 million pounds, considering Easy. how good he can be. 25 तो Saransh मिल bhai, जाएगा। who also Saransh bhai, who works with us, हमारे data segment से कभी कभी हम join करते हैं, is here. So he also has this YouTube channel, Poetic Scales, which is doing pretty well. He talks about data around football. So, guys, before I end this session, रोशन भाई आपसे पहले प्रोडिक्शन लूंगा कौन कौन प्लेयर्स आएंगे सीधे सीधे पूछता हूँ फॉर यू इस सारे ट्रांसफर विंडो For a solid transfer window, I would say Manu Kone रियलिस्टिक come. हाँ Manu Kone comes, and McAllister, Manu Kone are there, and I'm हाँ happy with that. Maybe if we can get a centre back, it doesn't matter. Like, I think Micky Van de Ven, I haven't seen him play a lot, but if we are scouting, then obviously he has potential. So I would still have anybody come just to give competition to Joel Matip and Joe Gomez. Uh, and if we can pull off a Pavard or a Kyle Walker, then that would be amazing. एब्सोल्युटली आइसिंग ऑन But द केक minus the right back, I'm more than happy with the transfer window that राइट we राइट at least got some players. Yeah. I agree, I agree. Darshan bhai, I'll come to you here. So, of course, Newcastle have gotten Tonali, who is a very, very good player. Now, Barella, I think, would be the answer to Tonali at this point of time. So, क्या आपको ये लगता है realistically Barella आएगा? क्या होता है लगता है आपको? What are your predictions with the transfer window? Thanks. बरेला नहीं आएगा। आई डोंट थिंक कि हम 85 मिलियन स्पेंड कर पाएंगे किसी भी प्लेयर पे। अगर Right. हमने कोई बड़ी सेल की तभी ये पॉसिबल है, वरना तो हमारा टोटल Salah. नेट स्पेंड 34-35 मिलियन पर सीजन निकल रहा है। सो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बरेला आएगा। मगर अगेन एक अच्छी ट्रांसफर विंडो वो होगी अगर हमने कोने को साइन कर लिया, थूरम को साइन कर लिया और पवार्ड को साइन किया। 3 साइनिंग आ गई और प्लस मैकलिस्टर तो आ ही गया है। ये 4 साइनिंग बहुत हो गई है। Right, right. हाँ, makes sense, makes sense. Parthiv भाई, as you said अभी chat box में कि the world isn't ready for prime Harvey Elliott, क्या लगता है क्या क्या साइनिंग्स आएगी अभी इस बार लिवरपूल के पास? Honestly, in my opinion, which I would like personally, would be Micky Van de Ven firstly, and Thuram. These two, honestly, and with McAllister is a perfect window for us considering what our budget is, the way we move. Because भाई हम सबको यहाँ पता है कि जितना हम लोग रियलिस्टिक सोचते मतलब जितना भी सोचते हैं उतना होता नहीं है कभी भी। इसमें करेंगे एम्बाप्पे आएगा, ये आएगा, वो आएगा, इनमें कोई नहीं आता। बट जो भी आता है अच्छा आता है। So and see, we are our foundation is based on that. So I would believe that, and I would honestly believe that players like Morton, Bachetic, Elliott, Jones get more chances, more opportunities to prove themselves. See, we have a thing ki a lot of people often banter us ki our academy is the Saint Mary's Academy, the one from Southampton which got relegated. So I want to show that we have good players. We got out Trent. We can get out even more better players if we just look into our academy once. कि निकालो इनको जो भी होगा देखा जाएगा. And we can risk that this season. Yeah, Right, actually, right.
आज मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें अपनी करंट स्वॉट अभी दिखा रही है कि कौन कौन बंदे अपने पास अवेलेबल है। अगर आप देखो तो थोड़ा सा टेंशन तो होगा ही अगर कोई बड़ा नाम नहीं आया। भले ही हम कह रहे कि यार वी शुड गिव चांस टू टाइलर मॉर्टन और बजट ये वो, मगर आखिर में हमें कम्पीट करना है। सो अगर आप स्क्वाड देखो तो आपको थोड़ी टेंशन होगी क्योंकि कोनाटे इंजरी प्रोन है, आपको मानना पड़ेगा। वैन डाइक अगेन उसका फॉर्म जो नीदरलैंड्स के लिए जा रहा है, इट्स वेरी वरिंग साइन। उसके अलावा मैटिप भी वैसा ही हाल है। तो अगर दो मिडफील्डर अच्छे नहीं आए तो मैं इसमें नहीं बिलीव करता कि भाई हमको दिखाना है साउथहैम्पटन की एकेडमी से बेहतर ये वो, समझा। मगर नहीं, those are all good supplement to already a good team. अच्छी टीम है और तुम्हारे पास अच्छे यंगस्टर्स हैं, then that makes it for like a better thing. But is that the best case scenario? No. वो हमारे लिए best case scenario is to have the best players and then supplement it with people like. Even I feel the same. Even I feel like players like Thuram, Kone, and Micky Van de Ven would be the perfect signings. And फिलहाल तो ये पिछला सीजन जितना बचा आई थिंक एलिसन की वजह से बचा, बिकॉज धोनी के बारे में ये बोलते कि एक था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था, हमारे लिए एक है जो हाफ लाइन के पीछे से गेम बदल देता है अपने किक से आगे आकर, बट वॉट एवर इट इज. And on that note, thank you, Roshan Bhai. Thank you, Darshan Bhai. And thank you, Parthiv Bhai. It's always great having you guys here, no matter how bad the transfer window is for us as Liverpool fans. I hope we can, I hope we at the Indie Football Podcast can have you guys again. And yeah, thanks for joining in. And thanks to everyone who came in and joined and listened. Please like, share and subscribe. Please subscribe to the LFC Ahmedabad, हमारा That Liverpool guy, और हमारे Instagram पे इंडियन स्काउसर के नाम से तो हमारे पार्थिव भाई भी पेज चला रहे, और लाइक ऑफ कोर्स दर्शन भाई और LFC अहमदाबाद का भी है ही वहाँ पे इंस्टाग्राम पे. प्लीज गो देयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो. And for more such football content, keep following the Indie Football Podcast. Thank you.